Welcome to my dear children. Myself Shiva Prasad Panigai, lecturer in mathematics of Nalanda Vidya Mandir, Plus 2 Science College, Berhampur. Now, this is our 6th class of matrices. Last class we have discussed about transpose of a matrix and also discuss about symmetric and skew symmetric of a matrices. Okay. Now, today we will discuss about transformation of a matrices. Transformation of a matrices. Transformation of matrices. What is transformation of matrix? Transformation of matrix means a matrix can transfer or change to another matrix. A matrix can transfer or change to another matrix by changing its elements of any row or any column. Okay? Now, that means let A be a matrix. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? This is matrix A. If you transfer matrix A to another matrix, that is another matrix, let we can change its two rows R1 and R2. We can interchange R1 and R2. So we can write first row is written in second row and second row changes to first row. That is this transformation made by interchanging of R1 and R2. तो हमें फर्स्ट रो ऑफ सेकंड रो में इंटरचेंज कर लिखिबा that is also a transform of another matrix, that is can be written as 4 second row written as first row 4 5 6 1 2 3 7 8 9. This is our transfer of a matrix A. I matrix का हमें ट्रांसफर व चेंज करी आउट मैट्रिक्स लिख ले, that is our transformation. Similarly we can change to column also. Okay, similarly we can change to column also. Here column 2 and column 3 are interchanged. Double inverse means column 2 written as column 3 and column 3 written as column 2. That is first column as you let us say हमें first column का हमें किसे change करना है, first column 8 1 4 7 and second column will be at a third column means 3 6 9 and second column goes to third column 2 5 8. If you interchange any two column, that is C2 and C2 interchange, therefore this is our transformation of A. We can change its two column, that is second column and third column. It is also transform one type of transformation, but here we can change R1 and R2. Okay, this is known as transformation of matrices. Okay. Now this operation or this elementary operation follows some rule. Okay, this changes or the elementary changes or elementary operation are followed some rule. A matrix can be transferred to another matrix can be transferred into another matrix by changing its rows or columns. हमें any rows को change कर पाए, one row or more than one row. Similarly you can also change its column also. A matrix can be transferred into another matrix by changing its rows or columns through some elementary operation.
elementary operation as illustrated below. आमे जो एलिमेंटरी ऑपरेशन करिबा सी एलिमेंटरी ऑपरेशन रे किछि कंडीशन अछि. जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंटरी ऑपरेशन. ओके, नाउ वी गो थ्रू दैट. In rows there are three types. Also in column we can apply in column same three rows. There are also three types. There are total number of 6 types. Okay, in rows operation, in elementary row operation there are 3 types. Is same operation can be done in also column. There are also 3 types. Total elementary row operation 3 types. Similarly, elementary column operation are also 3 types. Total number is 6 types. Okay, now we go through this. How we change a matrix to another matrix, and what is the condition, and what condition we can change one matrix to another matrix. First condition, by interchanging any two rows or columns. आमे रो रे जो ऑपरेशन कर परिबा कॉलम रे भी सेम ऑपरेशन कर परिया. जदि आमे रो रे नबा तो रो ऑपरेशन करिबा, जदि रो न नै कि कॉलम नबा तो कॉलम रे करिया. ओके, फर्स्ट कंडीशन इज बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और टू कॉलम्स. फर्स्ट टाइम हम करिया दीटा रो किंबा दीटा रो कॉलम को हमें इंटरचेंज करके वन मैट्रिक्स टू अनदर मैट्रिक्स को हमें ट्रांसफर कर परिया. ओके, इट इज denoted by if we interchange R1 and R3, we can write R1 tends to R3 and R3 tends to R1, or C2 C3 interchange. C2 C3 interchange. That means column 2 and column 3 are interchanged. Okay, for example, if a matrix 1 2 3 4 2 1 3 minus 2 3, let this is a matrix, we can transfer this to another matrix by interchanging any two rows or any two columns. First we interchange, let's say R1 and R2. Interchange R1 and R2. R1 और R2 को यदि हमें इंटरचेंज करके आउट मैट्रिक्स लिखिया, we can write another matrix. That matrix is known as transfer of this matrix interchanging R1 and R2. Okay, now the resultant matrix is, we can change R1 and R2. Therefore R1 is written as 4 2 1, R2 is first row 1 2 3, and third row is same 3 minus 2 3. This is our transformation of matrix. We interchange first row and second row of this matrix. Okay, similarly we can also change column 2 column 3. If we interchange column 2 and column 3, this also another matrix, and that is also transfer or changes of this matrix. That can be written as 1 column 1 same 1 4 3, and column 2 written here column 3. We interchange the column 2 and 3. column 2 और 3 को हमें कौन लिया इंटरचेंज करिबा, तो column 2 लिखिया हमें 3 1 3, column 2 लिखा 2 2 minus 2. This is our interchanging two columns, and this is our interchanging two rows. In this way we can change or transfer one matrix to another matrix. This is our first condition. Now we go through second condition. Now second condition is multiplying of a number
of a number non-zero scalar. Multiplying by a non-zero scalar every element of any row or any column. That means multiplying by a non-zero scalar every element of any row or any column. तमने matrices हाथिबो तार any row or any column रे we can multiply any one scalar. That scalar must be non-zero. Zero is not equal to zero. से zero है नहीं. Okay. For example, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This matrix transport to another matrix by multiplying a scalar by any row. For row 2 tends to 3. Scalar means 3 any number. 3 into row 2. Row 2 टाइम कौन कले ना row 2 रे जाहतले ताको 3 रे multiply कले. Now then we get the matrix is first row same 1 2 3. Now second row tends to 3 multiplied by R2. Every element of R2 multiplied by 3, that is 4 into 3 12, 5 into 3 15, 6 into 3 18. And row 3 is same. Row 3 हमें किसी change करना है तो row 3 का मैं same लिख दो 7 8 9. Okay, that means any row or any column, every element of any row and any column okay multiplied by a scalar. हमें कौन सी row किंबा column रे में गोटे scalar non-zero scalar दे हमें multiply करके ताको transfer करी परिया. Okay, this is our second property. Now I go through third property. Adding or subtract of k times any row or column to the another row or column. That means adding or subtract of k times of any row to the another row or another column. That means हमें 1 2 3 2 3 1 2 2 3. This is a matrix. Okay. Now this means we can multiply k by second row. Second row रे हमें कौन कले 2 multiply कले. Second row रे 2 multiply कले. से value रे कौन कले outer row रे हमें ले तो row रे multiply करछे row ले तो multiply करछे outer row रे नेके ऐड कले. आ ताको हमें कौन लिखले R1. Therefore R1 tends to R1 plus 2 into R2. Any one row multiply with a scalar and it adding or subtract to another row or another column. हमें यदि row 2 रे हमें उठे scalar multiply कले तो से value टा कौन करेगा outer row रे either row 3 और row 2 रे नेके ताको add करके और subtract करके लिखी पेरे. Similarly, if we multiply any column by a non-zero scalar and it add or subtract to corresponding another column. Okay. Now here R1 tends to R1 plus 2 into R3. हमें कौन कले R1 तक हमने लिखे ले R3 रे जियो सी 1 2 3 2 2 1 2 1 3. For example, this is a matrix है R1 tends to R1 तक हमें कौन करेगा ना R3 रे another row 3 multiplied by 2
and it add to R1 आने to multiply करके हमें R1 रे कौन करिया add करिया that means 2 into 2 4 plus 1 R1 5 2 into 1 2 plus 2 this is 4 3 into 2 6 6 plus 3 9 the first row changes in 5 4 9 okay now second row and third row is it same therefore we can write 2 2 1 2 1 this is our adding of k times of any row or any column to the another row or column in this three ways we can grow any three rows in this property this properties in three properties we can throw rows or throw columns okay now we go through inverse of a matrix we go through inverse of a matrix this is very important this is very important inverse of a matrix let A and B are two square matrices of same order A and B are two square matrices of same order such that A into B is same as B into A is same as I means identity matrix let A and B are two square matrix of same order if we multiply A with B or B with A we get the identity matrix of a same order that is I be the unit or identity matrix of order is the matrix is the matrix A and B A B matrix order जाथिबो I ର ମଧ୍ୟ unit matrix ର order ମଧ୍ୟ same ହେବ ହେଲା A into B is equal to B into A is equal to I then AB is equal to I we say B is the multiplication हमें दे A को B रे दिटा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करले हमें दे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पाइले B is the multiplicative inverse B is the multiplicative inverse of A okay B is the multiplicative inverse of A or simply says B is the inverse of A B कौन कहे हमें A रो inverse कहे that is A into that is B को कौन कहे हमें A रो inverse कहे that is A into B is equal to I this implies A into A inverse is equal to I A into A inverse is equal to I okay हमें यदि दीटा मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर जदि हम कोन करिया मल्टीप्लाई करिवा जदि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पाइले तहला हमें कोन कहबा B is inverse of A and similarly A is also inverse of B तो दीटा मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करले आइडेंटिटी मैट्रिक्स पाइले गोटे आ गोटा कोन हबो इनवर्स हबो A is the inverse of B and B also inverse of A okay
it is some notes. First note is, let A be a square matrix. A be a square matrix such that A into A inverse is equal to identity matrix same as A inverse into A. Okay? A into A inverse कले हमें identity matrix पाएगा, same A inverse into A कले भी हमें identity matrix पाएगा, है ना? तो second one is, if B is the inverse of A, then A is also inverse of B. Inverse of B. जदि B A रे inverse होला त माने A into B is equal to हमें कौन लिखिया? I लिखिया. तो is same as B into A also I. तो B is also inverse of A and A is also inverse of B. A B टा inverse हबो, A टा मध्य B टा inverse हबो. Okay? Third one is a square matrix, a rectangular matrix. A rectangular matrix doesn't possesses inverse. Does not possesses inverse. माने देखो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं तो माने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स माने कोन से स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं जदि स्क्वायर मैट्रिक्स हे नथिबो तार हमें इनवर्स बाहर कर परिया. ओके. And fourth point is, first point कोन, if A is a square matrix, A into A inverse is equal to identity matrix is same as A inverse into A. Second point is, if A is the inverse of B, then B is also inverse of A. And third point is, a rectangular matrix cannot possess inverse. Okay, rectangular matrix हमें inverse बाहर कर परिया. Now fourth point is, let A be a square matrix. A be a square matrix if inverse exists. If its inverse exists. If its inverse exists, then A matrix is known as invertible matrix. Invertible matrix. आमे एटा केतले इन्वर्टिबल कहबा न जदी गोटे मैट्रिक्स रो इनवर्स एक्जिस्ट अछि. जदी इनवर्स एक्जिस्ट अछि ताले इन्वर्टिबल कहबा. जदी गुडी तमरो गोटे टर्म आस्यो A is invertible means inverse exist. Okay, if A is invertible matrix, that means A must possesses its inverse, or A exists its inverse. Okay. Now we go through some theorem. First, last class we have discussed about two theorem, theorem 1 and theorem 2. Now here, first we go theorem 3. Let A be a square matrix. A be a square matrix if its inverse exists. That is unique. तामाने एटा दे स्क्वायर मैट्रिक्स हला जदि तारा इनवर्स में एग्जिस्ट करले दैट इनवर्स इज यूनिक. यूनिक मींस हमरा ए रो केवल गोटे ही इनवर्स रहबो. यूनिक मींस
केवल गोटे ही इनवर्स आसियो ओके नाउ प्रूफ let A be a square matrix let A be a square matrix consider or suppose matrix A have two inverse B and C हमें A matrix रो दीटा inverse अछि हमें consider matrix A have two inverse that is B and C okay by the definition of A रो inverse के गोटे ला B और ला C हाँ by the definition of inverse B A inverse you can write A into B is equal to B into A is equal to I जदि B टा A inverse A into B लिख परिया बा B into A लिख परिया that is equal to identity matrix similarly C is also inverse of A we can write A into C C is also inverse of A then we can write A into C is same as C into A is equal to identity matrix okay now we have to prove uniqueness of inverse that means inverse is exist if inverse is exist that is unique माने गोटी ही आसीबो त हमने केतरा कसे गले B C D का कसे गले it is sufficient to prove B is equal to C हमें B C D inverse कंसीडर करछे से दिटा जदि हमें गोटे देखा दबा B और C इक्वल देखा दबा ताले कोन जियो uniqueness proof हो जियो okay now B matrix B can be written as B into I if every matrix can be multiplied by identity matrix that is also same B matrix similarly we can write B is equal to B into I that is same as B into I means A into C is equal to I C into A is also I we can write I is equal to A into C B into I is can written as A into C okay now in matrix multiplication obey associative property that means B into A into C we can write here I is equal to A into C I is equal to A into C now B into A into C is same as BA into C BA into C that is equal to B into A is same as identity matrix we can write I B into I जगह में कौन लिख पे रहा I into C this implies any unit matrix with multiplied by C then we get C therefore B is equal to C this implies we have B is equal to C therefore uniqueness if inverse exists that is unique हमें दीटा कंसीडर करले कोन अलग अलग कंसीडर करले तो हमें फाइनली कोन पाइले both matrices are कोन same therefore proof is over okay now theorem 4 Theorem 4 says AB inverse is equal to B inverse into A inverse. AB inverse is equal to B inverse into A inverse. That means the inverse of product of two matrices, inverse of
product of two matrices is same as product of their inverse taken as reverse order. Taken reverse order. Reverse order माने A B रो जे में inverse ले दीटा matrix रो product करी तार inverse नबा आमे B रो inverse बार करिया A रो inverse बार करिया ताको जे मल्टीप्लाई करिया सेम हो inverse दा कोन हो ना reverse order रो inverse रो product सहित equal हो. Okay, now proof. We have to prove कौन प्रूव करिया A B inverse is equal to B inverse A inverse. हमें A मैट्रिक्स रा इनवर्स को हमें ती प्रूव करिया ना तो यदि if हमें अगर कौन पढ़ ले A inverse is equal to B A रा इनवर्स यदि B A रा इनवर्स यदि B A को B रे में मल्टीप्लाई करले हमें कौन पाउजे I पाउजे ना. If B is the inverse of if A inverse is equal to B, then we multiply A with B, we get identity matrix. Therefore, we have to. It is sufficient to prove. It is sufficient to prove this AB. Are inverse है ना? AB रो इनवर्स है ना तो AB और एटा डीटा को मल्टीप्लाई कर हम कोन पाइबा आई जदी देखे दबा ताले प्रूफ ही जोबे. इट इज सफिशिएंट टू प्रूव AB into B inverse A inverse is equal to identity matrix. Okay, AB multiplied with if these two matrices are multiplied we get identity matrix. Therefore one is the inverse of other. One is the this is one matrix and this is another matrix. Therefore this is the inverse of this. Therefore we can write AB inverse is equal to B inverse into A inverse. Okay, so then I prove कर दिले AB into A is equal to A, then we can say AB inverse is equal R inverse is equal to B inverse into A inverse. Okay, we have to prove AB into B inverse A inverse is equal to I. Now LHS A B product with B inverse A inverse. This is equal to, okay, let this be a one matrix and B inverse is also another matrix. A inverse also another matrix. This multiplied by B inverse A inverse is same as A B B inverse into A inverse. Matrix multiplication is associative. तो हमें इधर गोटे कंसीडर कर ले, आको गोटे कंसीडर कर ले, आको गोटे कंसीडर कर ले. There are three matrices. Therefore we can multiply these two with this is same as these two with this. Therefore we can get A into B inverse into A inverse. This is same as A into B inverse multiplied with A inverse. This is equal to A into B inverse. B रा inverse है तो B matrix से multiply करिया तो हमें कौन पाएगा I पाएगा ना I matrix पाएगा ना I into I matrix multiplied with A inverse. This is equal to A into I matrix is equal to A matrix. A matrix multiplied with A inverse. This is equal to if any matrix multiplied with their inverse that we get identity matrix. Therefore AB. Therefore AB multiplied with B inverse A inverse. AB multiplied with B inverse A inverse we get identity matrix. Therefore this is the inverse of this. Data matrix से multiply करिए identity matrix पहले what आउट करना वो inverse हो ये आर inverse हो ये वाला inverse हो. Therefore thus B inverse A inverse is the inverse of AB. Then it can be written as, therefore it can be written as AB inverse is equal to B inverse A inverse, hence proved.
ओके बुझुछ ना ठीक আছে हमें आज फर्स्ट कौन देखले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस मींस गोटे मैट्रिक्स को आउट मैट्रिक्स रे कन्वर्ट करिया और चेंज करिया बा ट्रांसफर करिया ओके दैट ट्रांसफर और चेंजेस और एलिमेंटरी ऑपरेशन थ्रू सम कंडीशन बेसिक देयर आर थ्री कंडीशन ओके फर्स्ट इज इंटरचेंजिंग एनी टू rows or any two columns okay or second property is we go through every element of any row or any column multiplied by a non-zero scalar second point and third point is adding or subtract of k times of any row or any column to the another row or column हमें गोटे रो किबा कॉलम रे गोटे मल्टीप्लाई करिकी ताको आउट रो किबा कॉलम रे ऐड किबा सबट्रैक्ट करबा दैट इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी हमें तीनटा प्रॉपर्टी फॉलो करके हमें गोटे मैट्रिक्स को आउट मैट्रिक्स रे कोन करबा कन्वर्ट करबा एलिमेंटरी दैट इज नोन एज एलिमेंटरी ऑपरेशन आर आल्सो टू टाइप्स इफ वी गो थ्रू इट्स rows that is known as elementary row operation if we go through it columns that is known as elementary column operation so हमें रो को रो चेंज कर जीवा that is our elementary row operations and we go through our changes in its column that is known as elementary column operation now we find a inverse of a matrix by elementary operation inverse of a matrix inverse of a matrix by elementary operation elementary operation are two types elementary operation are two types one is elementary row operation and second one is elementary column operation elementary row operation or elementary column operation okay now find a inverse of a matrix inverse of a square matrix by elementary operation माने we go through either elementary row operation or elementary column operation हमें कोन हला इधर रो गोटे ही फॉलो करे हमें दीटा जान जे रो को रो रे चेंज कर परिया कॉलम चेंज कर परिया कॉलम रे चेंज कर परिया है ना किंतु जो एलिमेंटरी रो ऑपरेशन और एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन तो ए दीटा करू हमें कोडले गोटे को फॉलो करिके हमें कोन करिया ऑपरेशन करिया ओके let A be a square matrix okay let A be a square matrix and I be the identity matrix of a same order as a order जाथिबो I order ताथिबो okay now we know A into I is same as A or this is equal to also known as I into जदि हमें A मैट्रिक्स रे यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिबा हमें A मैट्रिक्स पाइबा बा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रे भी A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करिया हमें सेम A मैट्रिक्स के पाइबा
ए गोटे मैट्रिक्स रे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिया हमें सेम मैट्रिक्स का पाउजे जो मैट्रिक्स रे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करतवा सेम मैट्रिक्स रे पाबा a into I is equal to a and I into a also a. Okay, now we find the inverse. We find the inverse of a matrix A. Okay, now we find the inverse of a matrix A by elementary row operation. हम कौन करिया इनवर्स बाहर करिया केमति बाहर करिया बाय एलिमेंटरी रो ऑपरेशन करके हमें बाहर करिया. ओके, फर्स्ट स्टेप, if we go through elementary row operation, we can write the equation. We can write the equation A is equal to I into A. हमें जो रो ऑपरेशन करिवा देखो हमें I is equal to A जानछे और A into I is equal to A जानछे और I into A is also A जानछे किंतु हमें जो रो ऑपरेशन करिवा तो हमें कोन करिया A is equal to I into A लिखा I into A कले कोन पाइबा हमें A मैट्रिक्स पाइबा ना किंतु हमें जो रो ऑपरेशन करिवा I into A में नबा है ना. तो फर्स्ट जो हमें ए इक्वेशन ना काहे कि नबा ना हमें तो हमें रो ऑपरेशन करछे आर फर्स्ट रो को आर रो को आर आई रो सहित आर एरा कॉलम को मल्टीप्लाई करछे तने करी हमें जो रो ऑपरेशन करबा वी टेक द इक्वेशन a is equal to I into A. ओके, फर्स्ट रे रो ऑपरेशन कले हमें ए इक्वेशन टा लिखिबा. देन follow the process if we operation or elementary row operation with A. ए मैट्रिक्स को हमें कोन करबा रो रे ऑपरेशन रो एलिमेंटरी ऑपरेशन करि कर दिबा है ना. तो इन द राइट साइड ऑफ पोस्ट मैट्रिक्स ए रिमेन अनचेंज आको कोन करियो ना रिमेन अनचेंज रखतियो माने ताको किछ हमें चेंज करबा दरकार नै. तो हमें ए रे जो प्रकार हमें एलिमेंटरी रो ऑपरेशन करि कर दिबा सेम रिफ्लेक्टेड टाइम कोन करिया आई ऊपर रिफ्लेक्टेड करिया. जदि हमें ए मैट्रिक्स रे हमें कोन करछे रो 1 को रो 2 को चॉइस करछे तो आई मैट्रिक्स रे मध्ये कोन करियो रो 1 को रो 2 को चॉइस करियो. ए मैट्रिक्स रे माने करो रो 3 को रो 3 टाइम्स टू 3 रो 3. ए मैट्रिक्स रो रो 3 रे कोन होलो 3 मल्टीप्लाई करलो त माने आई मैट्रिक्स रे कोन करियो आई मैट्रिक्स रे रो 3 रे मध्ये कोन करियो रो 3 मल्टीप्लाई विथ 3. जेमिति हमें ऑपरेशन रो ऑपरेशन ए ऊपर करिवा सेम ऑपरेशन हमें राइट साइड रो कोन प्रीफेक्टर ऊपर करियो दैट मींस आई ऊपर करिया कहे कि हमें एटा हमें कोन करछे एटा को राइट साइड रो पोस्ट फैक्टर टा को हमें रिमेन कांस्टेंट रखछे ताको हमें कांस्टेंट ताको किछि चेंज करिया नै को हमें रो ऑपरेशन करछे आर जेमिति रो को चेंज करिया रो सेमिति रो को चेंज करिया आर रो से ताको कॉलम चेंज मल्टीप्लाई करछे ना तेन करी आको हमें कांस्टेंट रखि देबा आर रो ऑपरेशन रे जेमिति हमें ऑपरेशन करि करि चेंज करिवा आई टा को मध्ये सेम रिफ्लेक्टेड करिकि आई जो यूनिट मैट्रिक्स टा को माने सेम चेंज करिया. ओके, केते पर्यंत हमें ताको प्रोसेस करिया ना एटा को चेंज करि करि हमें कन्वर्ट करि कोन करिया ना एटा a is equal to I into A अछि एटा को चेंज करि 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 स्टेप माने रो ऑपरेशन करि करि हमें कोन करिया आको आइडेंटिटी मैट्रिक्स रे कन्वर्ट करिया. जदि आको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स रे कन्वर्ट करिवा ई आई यूनिट मैट्रिक्स ता आई किनतियो से चेंज हेगी मानरो बी मैट्रिक्स रे कन्वर्ट हेला हला. तो यूनिट मैट्रिक्स आई कैन बी converted to another matrix that is B. If we multiply with A, P into A is equal to I.
हमें एटी कोन पाइले एटा को रो रे ऑपरेशन करी 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 हमें कोन करले ना हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स रे कन्वर्ट करिया दिस इज आवर मेन मोटो एटा को हमें यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रे कन्वर्ट करिवा आ हमें जो स्टेप रे जो ऑपरेशन करथिबा जो रो ऑपरेशन करथिबा आई ऊपर तारा रिफ्लेक्टेड होतबो माने एटी मन जहा ऑपरेशन करियो आई ऊपर यूनिट मैट्रिक्स ऊपर सेम ऑपरेशन करियो जदि हमें ए मैट्रिक्स को चेंज करके हमें यूनिट मैट्रिक्स आई पाइ गेले ई आई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स टा आओ यूनिट मैट्रिक्स की नथियो रे कोन हमर सेठी रो ऑपरेशन करी 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 हमें आउट मैट्रिक्स पाइले लेट दैट इज मैट्रिक्स बी इफ b multiply with a एटा हमर सेम अछि if b multiply with a then we get the identity matrix therefore b is inverse of a and a also inverse of b इनो बदिना मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई गेले आइडेंटिटी मैट्रिक्स पाइले तो b is inverse of a and a is also inverse of b ओके तो हमको कोन कोन दरकार कार इनवर्स दरकार a मैट्रिक्स रो तो a मैट्रिक्स रो इनवर्स के हबो b हबो therefore b is the इनवर्स ऑफ ए एरिया में जो मैट्रिक्स टा पाइतिबा ताको हम कोन करिया a रो इनवर्स बोल लेके इन दिस वे वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय elementary row operation we go through only row operation then we can if we go through row operation we can write the equation a is equal to I into a now we can also find the inverse of a matrix by column operation रो मध्ये हम कोन करबिया गोटे मैट्रिक्स रो इनवर्स बार करबिया ओके यदि कॉलम ऑपरेशन रे करले एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन जति एलिमेंटरी कॉलम ऑपरेशन करलो तो हमें a इज इक्वल टू कोन लिखिबा a into i कमे आर हमें ए मैट्रिक्स को हमें राइट हैंड साइड रो प्री मैट्रिक्स को प्री फैक्टर को हमें कोन करिया रिमेन कांस्टेंट माने सेम रखि दो आको अनचेंज माने आको किछि चेंज करिया s a तो हमें कोन करिया कॉलम ऑपरेशन करिया जति कॉलम ऑपरेशन करिया ए मैट्रिक्स रे जो टाइप रो कॉलम ऑपरेशन करी करी जीवो हमरो आई ऊपर सेम रिफ्लेक्ट करके कॉलम ऑपरेशन करी करी जीवो ए फर्स्ट स्टेप रे में माने कॉलम 3 कॉलम 2 को चेंज करले ए रो तो आई रे मध्य कॉलम 3 कॉलम 2 को चेंज करे हमर जिम्मेदारी रा चेंज करछे आको बे सेम वे रे कॉलम ऑपरेशन करी करी जीवो फाइनली हमर मोटा कोन रहइबो ना एटा को चेंज करी करी हमें आई मैट्रिक्स रे यूनिट मैट्रिक्स रे कन्वर्ट करिया आई यदि ये आई हे गेला एपड कोन हबो ये ए अछि ये चेंज हे माने करा बी हे गेला तो a b multiplied this is equal to identity matrix यदि a को हम b रे मल्टीप्लाई करिबा identity matrix पहले ताले कोन लिखिया b the inverse of a and also a also inverse of b मतलब हमो दरकार कोन inverse of a therefore b is the inverse of a है it is a b matrix टा पाइबा that is the inverse of a in this way we can find inverse of the matrix either by elementary row operation or by elementary column operation either elementary row or column है ना दीरे रे बाहर करे की दरकार नै जे तमे को रो रे बाहर करियो ए इक्वेशन रे कोन हो elementary row रे बाहर करले a is equal to I into a डाला elementary row operation the equation is a is equal to I into a और elementary column operation वाले कोन रखियो a is equal to a into a है ना इधर रो ऑपरेशन रे राइट साइड रो पोस्ट फैक्टर टा को कांस्टेंट रखिकी एटा को जेमिति रो ऑपरेशन करि गलो आइडा को सेमति करि जीवो सेम रिफ्लेक्टेड करबो आ एटा हमें केते दूर एटा प्रोसेस ऑपरेशन करि जीवा ना s i convert to sorry a convert to unit matrix in the same way I convert to another matrix b a into b is equal to I therefore b is the inverse of a in the same similar way we can also elementary inverse we can find also inverse in elementary column operation in column operation we can take the equation a is equal to a into I okay और a is equal to a into I माने आको जला में चेंज करिया आको चेंज कर जीवा आको कांस्टेंट रखि देबा आको चेंज करिया हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पाइबा is equal to a into b therefore b is the inverse of a b is the inverse of a okay thank you now we go through
a example. Now find the inverse of a matrix. गोटे मैट्रिक्स रो इनवर्स बाहर करिया पे कहबो तो से मैट्रिक्स टा कोन हेतिया पड़ियो ना स्क्वायर मैट्रिक्स हेतिया पड़ियो से मैट्रिक्स टा स्क्वायर मैट्रिक्स हमें 2 ऑर्डर 2 रो नै परिया ऑर्डर 3 रो भी नै परिया हला फॉर एग्जांपल मु फर्स्ट रे 2 रो नौचे हला लेट square matrix of order 2 that is equal to 2 5 1 3 2 5 1 3. Now find the inverse of this matrix either column operation or row operation. column operation कले जहा inverse पाइबो row operation कले भी same inverse पाइबो हैना दीटा रे करिया दरकार नै किंतु हमें दीटा रे करी कि तमे देखि देबा दीटा रे inverse same पाइबो हैना फर्स्ट elementary row operation माने हमें कोन नबा लेट दिस इज इक्वल टू a जो मैट्रिक्स दे जे ताको हमें कंसीडर करले a ओके जति हमें एलिमेंटरी रो ऑपरेशन नबा वी टेक द इक्वेशन कोन इक्वेशन नबा a इज इक्वल टू i इनटू a हमें नबा कोन a इज इक्वल टू i इनटू a नबा this implies a is equal to I into a हमें जितेले में रो ऑपरेशन करिया a is equal to I into a कोन करले इक्वेशन टा ले एबे कोन करिया ना a टा को कांस्टेंट माने अनचेंज आको किछि चेंज करे एबे कोन करिया a टा को चेंज करे रो ऑपरेशन करके जिबा ता सहित हमें I टा को चेंज करे I मींस यूनिट मैट्रिक्स टा को चेंज कर दिया तो a is equal to कोन लेछि और 2 5 1 3 दिस इज आवर मैट्रिक्स is equal to I माने यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सेम ऑर्डर हेतियो तो 1 0 0 1 जेतु हमें ए जगह रे 2 5 1 3 लिखि परिबा नले खाली ए भी लिखि परिबा कोन हम तो चेंज करिया नै तो वी कैन राइट ए मैट्रिक्स ओके और नाउ वी फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंटरी रो ऑपरेशन हम कोन करिया रो ऑपरेशन करिया तो फर्स्ट टाइम कोन करिया ना इठी हमें आको यूनिट मैट्रिक्स रे कन्वर्ट करिया तो इठी हमर 2 अछि आको हमें 1 करिया तो कोन करिया रो 2 रो 1 को माइनस करिया रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2 रो 1 कोन करिया रो 1 माइनस रो 2 करिया तो आ ऊपर करिया आ ऊपर भी सेम ऑपरेशन करिया दिस इंप्लाइज वी गेट कोन रो 2 रो 1 रे कोन लिखिया रो 2 रो 1 रो 2 माइनस करिया 2 minus 1 1 5 minus 3 2 और रो 2 को जब से लिखदा 1 3 ओके इज इक्वल टू एपर साइड रो करिबा ना रो 1 टेंड्स टू रो 1 minus रो 2 रो 1 टेंड्स टू रो 1 minus रो 2 और 1 minus 0 1 0 minus 1 minus 1 और रो 2 को जब से लिख दे इनटू a होला एबे देखो हमें 1 2 2 1 पाइले एबे कोन करिया आकु 0 करिया यूनिट मैट्रिक्स आकु 0 करिया 0 कि देबो ना रो 2 माइनस रो 1 करिया नाउ रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 1 रो 2 जगह हम कोन करिया रो 2 रो 1 माइनस कर लेके तो दिस इंप्लाइज हम कोन पाइले रे फर्स्ट रो में 1 2 जब से लिख देबा सेकंड रो को मेसेज करते सेकंड रो टेंड्स टू सेकंड रो माइनस सेकंड 1 तो corresponding element minus करिया 1 minus 1 0 3 minus 2 1 ओके इज इक्वल टू हमें कोन करले रो 1 टा जैसे लिखि छे तो 1 minus 1 एडी कोन करले 0 1 अछि तो रो 2 जगह कोन करले ना रो 2 रो 1 माइनस करले रो 2 रो 1 माइनस करले 0 minus 1 तो कोन आसला minus 1 1 minus of minus 1 माने दिस इज अवर 2 okay into a now we can convert or transfer it to unit matrix therefore 1 it must be 0 ए 0 हे जिवो आपन कोन जिवो बरटा
ये मैट्रिक्स हमरो यूनिट मैट्रिक्स हे तो हम कोन करिया ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करके यूनिट मैट्रिक्स करिया चाहछ ना तो हमरा देखो ये 1 डायगोनल एलिमेंट का 1 नहिला ऑफ डायगोनल एलिमेंट का ये 0 ला तो ये जदि 0 हे जो ताले हमर ये कोन जो ये ट्रांसफर के हमरा यूनिट मैट्रिक्स हे जो तो हमरो रो 1 चेंज करिया रो 1 रा कोन करबा ना रो 1 रे माइनस रो 2 को 2 रे मल्टीप्लाई करके रो 2 को 2 रे मल्टीप्लाई करके ताको रो 1 रो माइनस करिया तो दिस सिंपलेस हम कोन पाइले रो 1 रा कोन हो 1 आको 2 रे मल्टीप्लाई रो 2 * 0 0 1 - 0 1 इडी कोन करिया 2 आको 2 रे मल्टीप्लाई करिया 2 - 2 0 तो फर्स्ट रोटा लिख देले सेकंड रोटा कोन लिखले 0 1 ये हमर कोन आइला यूनिट मैट्रिक्स हे गेला ये हमरो यूनिट मैट्रिक्स हे गेला तो आपको भी हमें कन्वर्ट करिया रो 1 कोन करले दिस आपको 2 रे मल्टीप्लाई करिया अथवा माइनस करियो तो 1 - 2 * -1 होले -2 तो दैट इज 1 - -2 माने 3 तो ये कोन आसला 3 आसला इठी कोन आसला ना -1 अछि आपको 2 रे मल्टीप्लाई करियो 2 * 2 4 तो -4 तो कोन आसला ये -5 आसला ओके और रो 2 को जिंस लिख दो -1 2 into a therefore we get 3 - 5 - 1 2 into a is equal to 1 0 0 1 that is multiplied a with this matrix we get a identity matrix therefore this is the inverse of it therefore 3 - 5 - 1 2 is the inverse of it a inverse ta ko moi इथे लिखुची कोन लिखिया 3 - 5 - 1 2 3 - 5 3 - 5 - 1 2 is the inverse of a okay we can now we find the inverse in elementary row operation रे हमें a रो inverse बाहर करले similarly we can find the inverse using elementary column operation देखो 3 - 5 - 1 2 এটা হলো inverse of 2 5 1 3 now we go through elementary column operation okay now we go through elementary column operation we take the equation a is equal to a into I this simplest a means 2 5 1 3 is equal to एटा को हमें कोन करिया ऑन चेंज करिया एटा रखि द एटा कोन यूनिट मैट्रिक्स ता 0 1 1 0 एबे हम कोन करिया ए मैट्रिक्स को चेंज करी बा कॉलम रे ऑपरेशन करी कोन करिया यूनिट मैट्रिक्स करिया आपको कॉलम रे सेम ऑपरेशन करी हम को आउट मैट्रिक्स रे पाई दिया जो मैट्रिक्स ता पाइबा दिस इनटू दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें शो करिया ओके तो फर्स्ट टाइम कोन करिया कॉलम ऑपरेशन करिया देखो इठी हमरा 1 दरकार 2 अछि 1 दरकार कोन करला होय ना कॉलम 1 टेंड्स टू देखो कॉलम 1 रे 3 मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 माइनस करिया कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये कोन जो 6 हे जिवो ताइ जो कॉलम 2 जदी माइनस करिया -5 करिया तो ये 1 हे जो ना माइनस कॉलम 2 3c1 - c2 that is it gets 1 हमें 1 ने चाहिए ना फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स करछे दिस सिंपलेस हमें 3 into 2 6 - 5 1 इडी कोन करियो 3 into 1 3 - 3 0 तो सेकंड कॉलम कोन 5 3 जेम से लिखियो दिस इज इक्वल टू a into same operation and also identity matrix therefore c column 1 tends to 3 column 1 means this is equal to 3 है ना माइनस c2 means 0 83 रे मल्टीप्लाई करले कोन आसला 0 आसला -1 ये ला -1 और कॉलम 2 टा 0 1 ओके नाउ एबे कोन करिया ना एठी 0 करिया एठी 0 करिया जदी एठी 0 करिवा तो हमें कोन पाइबा केमिति करिवा 0 एटा 0 करिया हमें कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 टा करिवा जे 8 of 0 तो कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस 5 कॉलम 1 आको 5 रे मल्टीप्लाई करके आइनोडा कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट को माइनस करिया
तो सी एटा कोन हो C1 टा में जेमसे लिखिया 1 0 एठी हम कोन करले कॉलम 2 जगह रे कॉलम 2 माइनस 5 into कॉलम 1 तो 5 minus 5 into 1 5 5 minus 5 0 गेला 3 minus जहा भी 0 कले कोन आसले 3 आसला दिस इज इक्वल टू एठी हम कोन करिया ना कॉलम 1 टा जेमसे अछि 3 minus 1 अछि से रखि दवा कॉलम 2 टा हम चेंज करछे तो कोन करछे ना कॉलम 2 रो माइनस कोन करछे आको 5 रे मल्टीप्लाई आको 5 रे मल्टीप्लाई देबो 3 into 5 15 तो 0 minus 15 means minus 15 तो एटा कोन हबो ना 1 minus आको हम 3 रे मल्टीप्लाई 3 into minus 1 minus 3 सॉरी 5 रे मल्टीप्लाई minus 1 into 5 माने minus 5 1 minus of minus 5 means 1 plus 5 that is equal to 6 okay into a into this implies एति पहले एबे कोन करिया ना एठी देखो 1 0 0 गेला एठी हमर 3 रहला जदी एठी हमर डायगोनल एलिमेंट 3 गेला अपन में यूनिट मैट्रिक्स कहबे कि नहीं जदी एको में 1 करिया तो कोन करिया ना एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो स्केलर तो हमें कोन करिया ए कॉलम टा को column 2 tends to 1 by 3 into column 2 column 2 टा कोन करिया एबे 1 by 3 रे मल्टीप्लाई करता 1 by 3 is also a non zero scalar 1 by 3 रे मल्टीप्लाई करिया this implies we get ये लेबे ना ओ column 1 टा जेमसे रखले column आगो डिवाइड करले 3 मल्टीप्लाई करले 1 by 3 कोन पाइबा 0 3 multiplied by 1 by 3 ये गेला 1 therefore लेफ्ट हैंड साइड हमर कोन पड़सला जो मैट्रिक्स आइला कन्वर्ट करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स रे कन्वर्ट कर ले दिस इज इक्वल टू इटला a इनटू एबे कोन करिया कॉलम 2 रे जी अछि ताकू 1 by 3 रे मल्टीप्लाई करिया तो कॉलम 1 टा को 3 -1 लिख दा इट इज -15 मल्टीप्लाइड विथ 1 by 3 that is equal to -5 6 multiplied with 1 by 3 is equal to 2 therefore this is our therefore we get a into this matrix is equal to unit matrix therefore this is the inverse of a इटा में कौन व्यवहार करले इन कॉलम ऑपरेशन व्यवहार करले 3 -5 -1 2 रो ऑपरेशन व्यवहार करले 3 -5 -1 2 तो हम तमे रो ऑपरेशन व्यवहार करो कि कॉलम ऑपरेशन व्यवहार करो बोथ आर सेम कि हम दीटा व्यवहार करे दरकार नै उडले गोटे रे में बाहर करिया तुम बुझेली तो कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन दीटा तुमको बुझे दीची तमे जोट ठीक लागियो जोडे तुमको इजी लागियो ताकू धरि की इक्वेशन नबो कॉलम रे कले a a into n नबो रो रे कले a i into n की तमे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करियो ओके थ्योरी पार्ट कवर्ड मैट्रिक्स रो थ्योरी पार्ट सरला नेक्स्ट क्लास वी गो थ्रू एक्सरसाइज ओके थैंक यू